फरवरी 2017 में यूनियन बजट स्पीच में अरुण जेटली, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि आज़ादी के 70 साल बाद भी the country had not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. और इसीलिए to clean the system of funding for political parties, the government brought in the electoral bond scheme through amendments to 4 key legislations, that is the Foreign Contribution Regulation Act of 2010, Representation of the People Act of 1951, Income Tax Act of 1961 and the Companies Act of 2013. The scheme facilitates anonymous donations to political parties in India and liberates political parties from any obligation to disclose the source and quantum of such donation. But does this really create transparency? Let's have a look. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स परचेज करती हैं फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बॉन्ड्स मल्टीपल्स ऑफ रुपीस 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में बेचे जाते हैं। ये एक KYC कंप्लेंट अकाउंट के थ्रू परचेज किए जाते हैं एंड इट इज यूज्ड टू मेक डोनेशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज को इनको एक सर्टेन टाइम पीरियड में इनकैश करना जरूरी है, वरना ये PM रिलीफ फंड में डोनेट किए जाते हैं। इस स्कीम के आने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सारी डोनेशंस जो 20,000 से ज्यादा थी उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना पड़ता था। और तो और किसी भी कॉर्पोरेट को मोर देन 7.5% ऑफ देयर प्रॉफिट एंड 10% ऑफ देयर रेवेन्यू से ज्यादा डोनेट करना अलाउड भी नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू वही पॉलिटिकल पार्टीज जिनको एटलीस्ट 1% वोट्स मिले हैं इन द लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड आर रजिस्टर्ड अंडर द RPA को एक वेरीफाइड अकाउंट मिल सकता है वाया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बॉन्ड्स का अमाउंट इन्हीं अकाउंट्स में डिपॉजिट हो सकता है विद इन 15 days ऑफ देयर परचेज। अब जानते हैं why has this scheme been making headlines and why have there been made several arguments against the constitutionality and legality of this particular scheme. सबसे पहले it has been argued in the court that it violates the right to information under Article 19(1)(a) about political parties and citing previous judgments. Prashant Bhushan has said that if citizens have the right to know about candidates, then they certainly have the right to know who is funding them. Citing companies, Bhushan also told the court that there is certain circumstantial evidence to prove that there were kickbacks being paid by corporations via electoral bonds in order to get favors for the corporations. एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने 7.5% लिमिट ऑफ एनुअल प्रॉफिट रिमूव कर दी है और तो और इंडियन सब्सिडियरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया है, तो अब शेल कंपनीज भी यूज की जाएंगी टू मेक सच काइंड ऑफ डोनेशंस। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ओपेक कहा गया है और ये भी कहा गया है कि वो पूरी तरह से एनोनिमस नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता चलेगा except the government that who contributed to them, and since the SBI comes under the government, donations to the opposition can come under scrutiny by an investigative agency which leads to selective anonymity. Sibal in his argument pointed out that electoral bond is a misnomer as the money after being withdrawn can be used for any purpose since no one is asking how parties are spending their money. Sibal also submitted that this scheme will protect criminals from being prosecuted under the Prevention of Corruption Act and Prevention of Money Laundering Act (PMLA). He said that please read Section 7 of the Prevention of Corruption Act. This is also true under the PMLA. Because a predicated offense has been committed but no proceeds of crime, you will never know. You never know who bribed whom, how much was the bribe, what quid pro quo was there. You never get to know. Bhushan also said that these bonds eliminate the level playing field for political parties that are in the opposition and quoted that more than 50% have been received only by the ruling party at the center and the rest have been receiving by the ruling party in the states. Not even 1% has been received by opposition parties that aren't ruling in opposition states. सिबिल ऑल्सो आर्ग्यूड कि ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी अनफेयर है क्योंकि उन्होंने पैसा डाला था होपिंग दैट द कॉर्पोरेशन फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ MOU and by donating money to these bonds, companies not informing the shareholders as to how is their money being spent.
अब क्या ये बॉन्ड सच में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने में हेल्प कर रहे हैं? What are your views? The Supreme Court is in session listening to the arguments. Are you excited to know what happens? Because we are. Stay tuned to Law Visor to know more.